sometimes na new parents or even the parents who are already experienced, they have a misconception or confusion regarding that parenting means something we need to work on our kids. मम्मी को चाहिए क्या मेरे से? Zen Alpha generation is really much smarter. Those techniques जहाँ पर parents were screaming a lot or punishing their kids, that have been outdated. See, when we become a mom again na with our younger one, mostly what happens that we don't know that how to work on this one, कि मैं अब मेरे दोनों बच्चों में प्यार कैसे पन पाऊं. Welcome to another exciting episode of I'm Fine Season 2. Today we are honored to have guest Sneha Mishra, an experienced and compassionate parenting coach, joining us. With a wealth of knowledge and unique approach to nurturing positive parent-child relationships, Sneha is here to share her valuable insights, practical tips, and expert guidance. Join us as we delve into parenting with Sneha Mishra, uncovering strategies to empower support parents in their rewarding journey of raising resilient and thriving children. Thank you for being here. Most welcome, and thank you so much, Shavi, for inviting me here for this podcast today. Yes. It's wonderful to have you here. So, first thing, could you tell what is parenting? Of course, sometimes na new parents or even the parents who are already experienced, they have a misconception or confusion regarding that parenting means something we need to work on our kids or we need to rectify their behavior, but it's nothing about our kids. It about ourselves. Now, parenting means something that how I need to improve myself, how I need to rectify my own mistakes, right? Because जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है, in that same pace we also grow up. So it's all about parents, it's all about motherhood. Yes. One other question is that what are the effective strategies for managing challenging behavior in children that we see a lot nowadays, like with the Gen X, Gen Alpha, actually? Exactly. Thank you so much for raising this question here. Zen Alpha generation is really much smarter. And that's the main reason that we need to know the exact steps, the exact techniques, now. Mm. Because those techniques, jahan par parents were screaming a lot or punishing their kids, that have been outdated, right? And now we are more aware regarding the mental health issues as well, right? So we need to understand that what may be the exact strategy. So first of all, we need to understand that when we are talking about this Zen Alpha, we need to have a clear expectation with our kids, a clear communication. Like I have listened it so many times, even in family or with, I mean, in nuclear family, in joint family, if a child is misbehaving or doing something, they are like, वहां जंप नहीं करो, वहां मत बैठो, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं यूज करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो. So sometimes our kids, they are in a constant state of confusion कि मुझसे चाह क्या रहे मेरे parents. So first of all, we need to have a clear expectations, a clear communication. So rather than telling them that don't do these, that, just tell them Mm. what to do. ना, it's like धीमे चलो, शांति से बैठो, कम टीवी देखो, or whatever expectations you have with your child. Now the next thing, that for such kind of misbehavior, why we do such kind of misbehavior, it's because they need to be heard, they need our attention, they need that connection. So if we will start working on our active listening skills, for sure आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी, because they will have our 100% attention there now. And the next one is positive reinforcement. See, many times I have seen that parents, when they come to me, even for one on one session, they talk about
मैम मेरा बेटा तो पढ़ता नहीं है, मेरी बात सुनता नहीं है, ही इज अ पिकी ईटर, और आई मीन सो मेनी flaws they talk about their kids, right? But if we will start focusing on the positive areas, if we will start giving them some positive reinforcement for their positive behaviors, for sure, हाँ, हमें उनके बिहेवियर में जो चेंजेस चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो देखने को मिलेंगे. Now, above all, if I talk about modeling a right behavior, that one is very much important. Like today, parents are so much in stress about screen time, about study, about misbehavior of their kids, about anger issues. Na parents, they come to me with a 2 year or 3 year old kid and they talk like, मैम मेरे बच्चे को ना बहुत गुस्सा आता है, मेरा बच्चा ना बहुत जिद्दी है, मेरा बच्चा बहुत चिल्लाता है. बट समटाइम्स वी फॉरगेट अबाउट कि बच्चा ये सारी चीजें सीख कहाँ से रहा है, राइट? So 24/7, yes, our kids, they are watching us, right? So if we will be a good role model for our kids, if we will show that same behavior जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, वो उनको दिखाएं भी, कैसे शांति से बात करते हैं, कैसे शांत रह करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, आई मीन वॉट एवर एक्सपेक्टेशंस वी हैव विथ आवर किड्स, if we will be a good role model, for sure they will see and they will do. And the most important is consistency. Sometimes what happens now कि अगर हम घर पे हैं तो वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स, और अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे हैं या हम किसी गेस्ट के घर पे, किसी रिलेटिव के घर पे हैं, वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स. सो किड्स दे गेट कंफ्यूज लाइक मम्मी को चाहिए क्या मेरे से. आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड विथ टॉडलर्स ना. तो समटाइम्स दे टॉडलर्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि मम्मा घर में मुझे बोलती है कि फोन मत चलाओ, और जब आंटी के घर में आया हूं तो मम्मा खुद ही कार्टून लगा करके दे रही है और बोल रही है बेटा देख लो कार्टून. सो Hmm. कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट ना. if you are making any kind of rule for your child, just try to be consistent. Like if you are telling it to yourself कि मैं बच्चे को कुछ भी स्पॉयल करने पे डांटूंगी नहीं ना, या मैं बच्चे को गलतियां करने पे, किसी भी तरह की गलतियां करने पे डांटूंगी नहीं. एक दिन आपने ऐसा किया, दैट्स रियली वेरी गुड. 2 दिन किया, बट इफ थर्ड टाइम यू स्टार्ट डूइंग दैट सेम थिंग, आप पापा से चीखने चिल्लाने और गुस्सा करने लगी, योर किड विल गेट कंफ्यूज कि मम्मा एक्चुअल में क्या चाहती है. So, whatever rules you are making, either for your child or for yourself, you need to be consistent for that. That's it. Yeah. One more thing I wanted to ask from your answer was, can you give some examples of positive reinforcement that we should use with children? For sure, there are so many positive reinforcement we can use with our kids. It's not always physical. No, in fact, physical, yes, like behavioral charts are there, और sometimes like जैसे हम लोग बच्चों को स्टार देते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स ना, सो इन दैट केस यस, लाइक हम लोग स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ स्टिकर्स उनको दे सकते हैं. दीज आर ऑल द physical reinforcement. But I believe rather than using such kind of physical reinforcement, there are so many reinforcement which is based on connection, which is more related to their emotions and feelings ना. So it's like कि अगर मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, so I can simply tap on the shoulder कि तुमने बहुत अच्छा किया. I can hug my child or I can kiss my child ना, that mama really very proud of you. So such kind of gesture that convey the exact message to our kids ना. And this is actually the positive reinforcement. Positive reinforcement का मतलब क्या है? That means कि जिससे किसी भी तरह के डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाया जा सके और जिससे बच्चे को अच्छा फील हो. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट प्राइजेस और सरप्राइजेस और चॉकलेट और टॉफी, नो. हम लोगों के पास जो भी
कन्वे करने का, अपने पॉजिटिव फीलिंग्स को कन्वे करने का तरीका है विद आवर किड्स, इफ वी विल डू सो, फॉर श्योर दे विल अंडरस्टैंड एंड दैट काइंड ऑफ डिजायर बिहेवियर will start increasing. Thank you so much for answering. One more thing that I was personally curious about was how can parents strike a balance between setting boundaries and fostering independence? Because most parents at this time wants that their child should be independent. Hmm, that's true. So, thank you so much, Shavi, because yes, mostly parents are working nowadays. Yeah. They have a constraint of time, and yes, they need it. ना, there are so many parents, they come to me and they talk like, मैम मेरा बच्चा तो मेरे बिना ना खाता नहीं है, मेरे बिना सोता नहीं है, मेरा बच्चा बहुत डिपेंडेंट है मेरे ऊपर. अर्लियर आई वॉज अ वर्किंग मॉम, बट मैंने रिजाइन कर दिया. अभी मैं कैसे ज्वाइन करूं, अभी मैं कैसे स्टार्ट करूं? So the very first thing which we need to do is gradual independence. Like whatever skills they want to teach to their kids, they need to understand कि बच्चे को ना धीरे धीरे एज अप्रोप्रिएट जो स्किल्स है वो स्टेप बाय स्टेप्स सिखाने हैं, राइट? एंड लेट देम enjoy that achievement. This is very much important. Like if we will start celebrating their achievements now step by step, they will have that confidence that yes, now I can do this thing also, now I can do that thing also. Like I'm talking my own experience with my daughter. तो मैं उसको किचन में हर दिन कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करती हूँ. सो नाउ what I have started कि वो बॉटल फिल करके खुद से रख रही है, वो अपनी स्कूल की वाटर बॉटल खुद फिल करती है ना, वो डाइनिंग टेबल पे ग्लास फिल करके रखती है. बट यस, शी इज 4.5 year old now, and now she started doing so, because earlier I was thinking like कि नहीं, 3 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता. So Mm. gradually I have started doing all these things with my daughter. Now the next thing is that start encouraging problem solving. There is no need to help your kids ऑफन ना. लाइक कई बार क्या होता है ना कि बच्चे किसी चीज के लिए रो रहे हैं और दे बिकम क्रैंकी और दे स्टार्ट थ्रोइंग टेम्पर टेंट्रम एंड मॉम्स आर लाइक, अच्छा चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ. ओके, आई विल डू योर होमवर्क. ओके, आई विल सॉल्व दैट थिंग. ओके, यू हैव लॉस्ट दैट टॉय. ओके, आई विल सर्च इट फॉर यू. डोंट डू इट एवर, बिकॉज इन दिस वे your kid will never understand कि प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कैसे करना है, राइट? सो लेट देम फेस दैट फेज ना, उनको खुद से सीखने दीजिए उनको. यस, until and unless they won't come to you and they start saying कि मम्मा अब मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे से हो नहीं रहा, that's the perfect time to join your child and to help your child. Otherwise, just encourage that problem solving skill. Ask them कि अच्छा ये प्रॉब्लम को कैसे और सॉल्व किया जा सकता है और ऐसा क्या कर सकते हो, राइट? Yes, but in some cases, like I always prefer, being a mom of toddler, I always prefer like safety first. राइट, तो अगर मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि ठीक है तुम किचन में वाटर बॉटल फिल अप कर सकती हो, ठीक है तुम सभी के लिए खाना सर्व करती हो, एंड इफ शी स्टार्ट इंसिस्टिंग मी कि मम्मा मैं थोड़ा ना आज सब्जी भी चॉप कर लूं, सो फॉर मी सेफ्टी इज फर्स्ट. आई विल नेवर एवर परमिट हर फॉर दिस थिंग ना, until and unless I feel like कि नहीं अभी वो इतनी बड़ी हो चुकी है that she can use knife and scissor by herself without any kind of observation, right? सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जब बच्चे को सेल्फ डिपेंड होना सिखा रहे हो, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई सेफ्टी कंसर्न आपको फील हो रहा है ना, देर इज अ हाई टाइम टू स्टॉप योर चाइल्ड. एंड द लास्ट वन इज नेगोशिएशन. सी, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वी नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल इन आवर पेरेंटिंग, राइट? सो इफ योर चाइल्ड विल से यू लाइक कि नहीं मैं ये चीजें खुद से कर सकता हूँ, जस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर, wait, have patience, and trust your child. For sure they can do it. Sometimes we have that motherhood instinct or that parenting instinct कि नहीं मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा, बहुत छोटा है, बिकॉज हर पेरेंट को उनका बच्चा किसी भी एज का हो छोटा ही लगता है, Mm. राइट? सो
जस्ट हैव सम नेगोशिएशन विथ योर चाइल्ड कि अच्छा ठीक है, हम लोग ना इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं ऐसे मिलकर सॉल्व करते हैं, एंड लेट हिम डू इट बाय हिमसेल्फ. Yes. One more thing I wanted to ask was that sometimes we see that the the dependency is go farther, like बच्चा like 14 15 का, and then also parents are like कि तुम नहीं करोगे हम करेंगे. So Hmm. Hmm. what are your thoughts on that? It's because helicopter parenting actually. There are some Mm, kinds of parenting style, and helicopter parenting is one of them. So what happens most of the time, जब हमारे पास single child होता है, या फिर जहां पर moms who feel it like कि मेरा बच्चा ही मेरी दुनिया है. So what they start doing with their kids कि वो over concerned होती हैं बच्चे के लिए, right? क्योंकि of course every mother loves their kids unconditionally ना, and we cannot imagine that mother's love कि माँ कितना ज्यादा बच्चे को प्यार करती है, for either for safety purpose or for any kind of purpose I'm talking about. But ऐसे टाइम पे when you are having a 14 or 15-year-old child, एंड इफ यू आर नॉट परमिटिंग योर चाइल्ड कि वो कोई काम खुद से करे, लाइक इमेजिन कि वो खुद से स्कूल जाए, अगर घर के पास में स्कूल है, एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं उसके सारे क्लासमेट साइकिल राइड करके खुद से जा रहे हैं, सो माई चाइल्ड कैन डू दैट सेम थिंग, और माई चाइल्ड कैन डू, आई मीन कैन गो टू द पार्क बाई हिज ओन. और अगर आप ऐसा नहीं करने दे रही हैं, यस फॉर श्योर यू नीड टू चेक टू योर ओन सेल्फ, मैं कहीं हेलीकॉप्टर पेरेंट तो नहीं बन रही हूँ. क्योंकि अगर आप ऐसा कर रही हैं, आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ को रोक रही हैं. आप आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बच्चे के सामने खड़े करने वाली हैं, बिकॉज देयर विल बी डिफिकल्ट टाइम इन हिज लाइफ व्हेन अ मॉम और अ dad won't be there with the child, and the child will have to face those tough situations by his own, right? तो अगर ऐसे टाइम पे मॉम्स ऐसा कर रही होती हैं, it shows that yes, they are having either a low self esteem, or they are so much concerned with the child, or they are having some problem with their own selves. और वही इसका रीजन होता है कि वो बच्चे की पेरेंटिंग पे हमें दिखता है. one more thing I wanted to ask was that uh, sibling rivalry. We have seen Hmm. like a lot of in even in jokes we see a lot of sibling rivalry, and I myself has a sister and like we fight a lot. So could you Hmm. share some Hmm. tips for navigating often tricky territory of sibling rivalry? Sure, I will start it from the starting, like Yeah. why it happens. Now, see, when we become a mom again, na, with our younger one, mostly what happens that we don't know that how to work on this one, कि मैं अब मेरे दोनों बच्चों में प्यार कैसे पन पाऊं ना. And motherhood journey is something which is very tricky, because I'm tackling a 4 year or 5 year old toddler, and right now I'm having a newborn in my lap, right? और मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग एट द सेम टाइम दैट हम लोग बड़े बच्चे को बोलने लगते हैं अभी ना तुम बड़ी हो गई हो, राइट? यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू विल हैव टू बी सीरियस, you will have to behave like mature. And at sudden that 4 year old feel it like कि अचानक से कैसे mature हो गई मैं, मतलब कल तक तो नहीं थी, right? Mm, So the very first thing we need to understand that your elder one is also a child, which most of the time parents forget about. बिकॉज जब छोटा सा नन्हा मुन्ना हमारे घर में आता है, दे फील इट लाइक कि हमारा बड़ा बच्चा तो अब बड़ा हो चुका है, तो उसको बड़े जैसा बिहेव करना चाहिए, बट इट्स नेवर लाइक दैट, because that elder one is also need that same connection from their parents. Now number two, don't blame the baby. Most of the time I have seen in families कि माँ बोल रही होती है बच्चे से कि बेटा ऐसा है ना कि
अभी ना मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारी बहन को या तुम्हारे भाई को मुझे अभी ना फीड करवाना है, मुझे ना उसकी पॉटी क्लीन करनी है, मुझे ना उसको नहलाना है, और आई मीन देयर आर सो मेनी चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स दे हैव। तो और बड़ा बच्चा क्या सोच रहा होता है कि अच्छा, अर्लियर मम्मा वाज वेरी मच, I mean, she was loving to spend such kind of quality time with me. मम्मा के साथ मैं पहले आराम से पार्क जा पा रही थी, खेल पा रही थी, इंजॉय कर पा रही थी, टीवी देख रही थी और वट एवर ना। बट अभी से ये जो अचानक कोई आ गया मेरे घर में, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ओनली, मम्मा इज सो मच बिजी और मुझे अवॉइड किया जा रहा है। नाउ मम्मा डजेंट लव मी एनी मोर, राइट? सो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द डे वन। सो फ्रॉम द डे वन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्लीज डोंट ब्लेम द बेबी, कि बेबी की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, राइट? Just talk about your own needs, about your own feelings and emotions, that I need some time ना, मैं इसको खत्म कर लूंगी and for sure I will come to you, I'll play with you, I'll go park with you or whatever you are promising to your elder one. Now the next one is that don't compare. Many times what happens that I have seen, हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाता है। अरे आपका जो बड़ा बच्चा है ना वो थोड़ा सा डल कॉम्प्लेक्शन का है, बट दिस वन इज लुकिंग मोर फेयर ना, वो थोड़ा लीन एंड थीन है, बट दिस वन इज लुकिंग लाइक अ चबी बेबी, राइट? और सो मेनी कंपैरिजंस वी हैव फॉर लाइफ लॉन्ग। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपैरिजन की वजह से ये सिबलिंग राइवलरी स्टार्ट होती है। हम सभी अलग अलग होते हैं, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इस तरह का कोई कंपैरिजन सिबलिंग्स के बीच में करना ही नहीं चाहिए, either about the looks or about the weight, about education, about habits, about anything, right? Now because sometimes I have seen it कि चलो देखते हैं पहले खाना कौन फिनिश करेगा। अभी उन दोनों के बीच में कंपटीशन किसने स्टार्ट किया? पेरेंट्स ने, राइट? तो हम लोग डे वन से पहले खाना कौन स्टार्ट करेगा, पहले दूध कौन फिनिश करेगा, पहले स्कूल कौन जाएगा, पहले रेडी कौन होगा। सो दे जस्ट परसीव टू ईच अदर कि अच्छा इससे मुझे कंपटीशन करना है, राइट? बट वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उससे कंपटीशन नहीं करना है। योर सिबलिंग इज नॉट योर कॉम्पिटिटर, योर सिबलिंग इज एक्चुअली योर टीममेट। So what we need to do in the place of telling them कि तुम उससे competition करो, just call them as a team कि चलो देखते, just like I do with my own daughters. I'm blessed with two daughters. My younger one is 2 years old. तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों को बोलती हूँ कि अच्छा देखते हैं सिस्टर्स टीम ये काम अच्छे से कर पाएगी क्या, अच्छा देखते हैं सिस्टर्स टीम 5 मिनट्स में सारे टॉयज को क्लीन अप कर पाएगी क्या। एंड दे जस्ट लुक एट ईच अदर कि हम लोगों को ना साथ मिलके काम करना है, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट अप्रिशिएट दैट डिजायर्ड बिहेवियर। कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स आर लाइक कि जब दोनों सिबलिंग्स आपस में लड़ रहे हैं, दोनों सिबलिंग्स के एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, they immediately go to them and they start scolding them, they start giving them attention to that negative behavior। तो आप जिस भी तरह के बिहेवियर को अटेंशन देंगे फॉर श्योर वो बिहेवियर बढ़ता जाएगा, राइट? तो rather than giving that attention to that negative behavior, try to catch them when they are having that loving moment। ऐसा नहीं है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ हमेशा लड़ाई कर रहे होते हो ना, आप सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे पल भी बिता रहे होते हो। एंड यस फॉर श्योर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन। तो जब आपका बड़ा बच्चा आपके छोटे बच्चे के साथ प्यार कर रहा हो, उसको हक कर रहा हो, उसको किस कर रहा हो, उसके साथ खेल रहा हो, उसकी हेल्प कर रहा हो, जस्ट इमीडिएटली गो टू देम and appreciate that desired behavior, that positive behavior, so that that behavior will start increasing in future. So this is my mantra actually, which I found, and I'm trying and I'm getting really very good results. Well, that's amazing. And we hope that our listeners also will get a wonderful insight from your answers. And
things that have been working for you. And Sure. one last question that I wanted to ask was, in today's digital age, how can parents promote healthy screen time habits for kids? Because we have seen, like, I myself has like 10 hours screen times at one time. Like, the childrens have a lot of screen time. They're watching a lot of television, animated cartoon, YouTube. Hmm. One of the most emerging questions you have asked, because parents now, this is the Zen Alpha generation which we are raising right now, जहां पर बच्चों के प्ले स्कूल नर्सरी और केजी क्लासेस से उनके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? तो ऐसे टाइम पे स्क्रीन टाइम बैलेंस करना इज रियली वेरी ट्रिकी फॉर पेरेंट्स. So first of all, what I feel personally as being as a counseling psychologist or as a mom, that I need to be a good role model. Like if 24/7 my kid will see me that I'm busy, either I'm scrolling some reels or shorts, or I'm busy to check my Gmail account or my Facebook or whatever, right? So for sure, our kids, they learn by vicarious learning. Whatever they see, they learn. तो पहले क्या करना है, दैट हमें अपना जो स्क्रीन टाइम है वो बैलेंस करना है. वी नीड टू फिक्स दैट टाइम कि हम सिर्फ इतने टाइम ही फोन टच करेंगे, हम इतने टाइम ही टैबलेट और लैपटॉप टच करेंगे, अदरवाइज आई विल बी अवेलेबल फॉर माई चाइल्ड. फर्स्ट थिंग, try to be a good role model. Now second thing is that do a mental preparation. Like if I'm talking about a 2 year, 3 year or 4 year old, लाइक इफ आई से देम कि अभी ना बहुत देर टीवी देख लिया, चलो टीवी ऑफ कर देते हैं एंड दैट्स इट. तो अगर हमारे साथ भी ऐसा हो, हाउ विल वी फील एट द टाइम? ना, ट्राई टू बी अ लिटिल बिट एम्पैथेटिक विथ योर चाइल्ड. तो अगर हम भी अपना बहुत फेवरेट शो देख रहे हो और अचानक से कोई आकर के स्विच ऑफ कर दे और बोले कि चलो नहीं देखना, उठो जाओ यहाँ से, हमें कैसा फील होगा? दैट सेम हैपेंस विथ आवर टॉडलर्स, विथ आवर किड्स एज वेल. तो करना क्या है कि बच्चे को पहले से मेंटली प्रिपेयर करना है. तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ विथ माय ओन किड्स, तो मैं उनके पास जाकर के बैठ जाती हूँ, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करती हूँ, जस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट दे आर वाचिंग. अच्छा तो तुम ये देख रहे हो, अच्छा तो ऐसा हो रहा है, ओ दैट्स रियली वेरी गुड. और जब बच्चा आपके साथ कन्वर्सेशन में बिजी हो, जस्ट टॉक अबाउट इट कि बेटा अभी ना इतना टाइम हो चुका है, ना दिस इज द टाइम टू स्टॉप योर स्क्रीन टाइम. So mama is going to count till 10 or mama is going to count till 20, because kids, I'm talking about from 2 years, because 2 साल से पहले हम screen time देते ही नहीं. We need to understand this thing also. So kids from 2 years to 7 or 8 years, दे हार्डली हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया अबाउट टाइम. अगर मैं उनको बोलूंगी कि 5 मिनट्स में टीवी ऑफ होने वाली है, तो उनको वो आइडिया होता नहीं है बेसिकली. सो व्हाट आई डू विथ माय ओन टॉडलर, कि मैं उसको बोलती हूँ कि नाउ मम्मा इज गोइंग टू काउंट टिल 10, और जैसे ही 10 बोलूंगी यू विल हैव टू स्विच ऑफ. एंड ट्रस्ट मी, 99% ऑफ द टाइम मेरी बेटी खुद से जाकर के टीवी ऑफ करके आती है, राइट? सो मेंटल प्रिपरेशन वर्क्स अ लॉट. मतलब इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है. नाउ just talk about the healthy screen time, because kids sometimes they talk back, they argue a lot with their parents कि अच्छा जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तब तो आप ही बैठाते हो वहां पर कि बेटा पढ़ाई करनी है, अभी मैं बोल रही हूँ कार्टून देखना है तो आप मना कर रहे हो, राइट? सो वी नीड टू टॉक टू देम कि हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स है क्या, हम तुम्हारे साथ ये रूल्स क्यों बना रहे हैं, क्यों तुम्हें इसको फॉलो करना है, क्यों 30 मिनट्स ही मिलेगा स्क्रीन टाइम, राइट? एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. now consistency matters a lot. Like if today I'm giving 1 hour screen time to my child, and on a second day, because of any kind of reason, if I'm giving him 2 hour or 3 hour screen time, for sure मेरे बच्चे को लगेगा कि आज 2 घंटे मिले मतलब कल भी मिल सकता है, right? So for that one, my child will start throwing temper tantrums.
या फिर वो मेरे से आर्ग्यू करेगा, टॉक बैक करेगा, जिद करेगा, वॉट एवर वे ही नोज, ही विल ट्राई हिज बेस्ट। कि मुझे कल 2 घंटे मिले थे, मतलब आज भी ट्राई कर सकता हूँ, आज भी, बिकॉज दे ऑलवेज चेक देयर लिमिट्स, दे ऑलवेज try to cross their boundaries. Now, so as a parent, we need to be so much consistent with the screen time rule. And the most important thing which always work for me in my family, और मुझे लगता है बहुत सारी मॉम्स को भी हेल्प करेगा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद, द थिंग विच आर आउट ऑफ शाइट, आउट ऑफ माइंड, दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट। लाइक बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं लेती हूँ कि अगर हम लोगों ने अपने वार्डरोब में कोई कपड़े रखे हुए हैं और बहुत लंबे टाइम से हमने चेक नहीं की अपनी वार्डरोब कि कौन कौन सी ड्रेसेस रखी हुई है, तो कई बार हम भूल भी जाते हैं कि मेरे पास उस कलर की भी वो वाली कोई ड्रेस थी। और इधर आई एम टॉकिंग अबाउट किचन मटेरियल, कि हम किचन में कोई चीज सामान रख करके भूल गए और बहुत दिन से चेक नहीं किया है, तो हमें याद भी नहीं आता है कि अच्छा मेरे किचन में ये वाला मसाला भी पड़ा हुआ था। In that same manner, what happens that if your child is watching you all the time, कि अच्छा घर में यहाँ भी फोन रखा है, वहां भी लैपटॉप रखा है, वहां भी टैबलेट है, टीवी आपके बेडरूम में ही लगा हुआ है, फॉर श्योर बच्चा देखेगा और जिद करेगा। तो लाइक मैं अपने घर में खुद यही काम कर रही होती हूँ कि मेरे घर में जो टीवी है वो मेरे बेडरूम में नहीं है, हमारे हॉल में लगी हुई है। एंड माई डॉटर शी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि उसका एक फिक्स टाइम ही है, इतने टाइम ही टीवी ऑन होगी और इतने टाइम पे टीवी ऑफ हो जाएगी। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम पूरे घर में उसको कहीं कोई दूसरा गैजेट नजर नहीं आ रहा होता है। सो दैट्स द मेन रीजन जिसकी वजह से वो कभी भी स्क्रीन टाइम के लिए मुझसे जिद भी नहीं कर पाती है। So this is my parenting mantra. I hope it will help so many parents who are watching this session and listening this podcast today. Yes, thank you so much for coming to our podcast. We had a wonderful time talking to you. Most welcome, Shavi. And I really feel like बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, because parents they need to understand all these things regarding child mental health, regarding child psychology, and you have raised so many superb questions here. So thank you so much for inviting me today here. Yes, thank you so much.